एक विकास इसमें होगा, और वो इसके कर्मों पे डिपेंड करता है कि ये कितना मतलब इच्छुक है। अब दोनों सिद्धियां एक जीवन में होगी ना, इसलिए मेरी तस्वीर से योग होने लगी। क्या कितने अमेरिकन औरतें ध्यान करती है, गौतम ने बताया नहीं था। और जितना टाइम मांग के बैठती है उतना टाइम में ध्यान भंग हो जाता है। इसका साइंस का क्या जवाब है? अगर ये वेबसाइट पे ऐसा लोगों को कहे और ध्यान से, तस्वीर के ध्यान से योग हो जाता है, कुंडलिनी जाग जाती है। खेचरी मुद्रा, एक खेचरी मुद्रा और नहीं बताया। एक खेचरी मुद्रा जो होती है उसमें क्या होता है, जीभ पीछे खींचती है, ये टांग जो है पीछे खींचेगी। Khechari mudra? Khechari mudra. Yeah. Yeah. I'm not sure which place it touches, the soft or the hard or... Yeah, let me just Oh, explain. okay, that. okay, okay. वो एक मतलब एक कौवा जिसको कहते हैं लटकता है ना, इसके इधर एक, हाँ वो एक होलो स्पेस, जीभ खींच के सख्त होकर ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट को टच करती है, वहां से एक रस टपकता है। हमारे योगियों ने इसको अमृत कहा है, अमृत कहा है। गोरखनाथ जी ने कहा है, गगन मंडल में उंदा कुआ, हाँ अमृत का वासा, सुगरा हुए बरबरती हुए निकल जाए पैसा। तो गुरु की कृपा से ही वो खेचरी लग सकती है। ये महारानी मुद्रा है, ये सबसे मुश्किल है। गुजरात में इसके लिए बहुत हल्ला मचा था। हाँ, What Gurudev says नेक्टर टपकता है। what Gurudev says is that whatever you experience or your spiritual, your spiritual enlightenment, that can come about only when there is a deep desire within you for this to happen. If you're somehow doubtful about him, if you are not very interested, or your faith is divided, then that creates a roadblock on your path to evolution or your progress. So you have to be dedicated. You have to have faith in him as a guru, and when you have faith in him as a guru, that's when the guru or the divine bestows its grace upon you. And the grace, so he says, what is an indication of the grace? The indication of the grace is the khechari mudra. So what happens during khechari mudra is, during meditation, your tongue is pulled backwards and it touches a point on the roof of the tongue, not the hard portion, but right behind it. It's mildly painful sometimes when your tongue gets pulled far behind. I mean, you would normally when you're in your state, like a conscious state, you wouldn't be able to pull your tongue that far back. Ah, okay. Yes, it gets pulled that far back and it touches the roof of the mouth. And there's a small hollow space where it touches, and that's when there is like a sweet nectar-like secretion that drips down. And that's what he says is called amrit in Sanskrit, which is like an elixir of life, or what he says, like nectar. Right. And so that's what he says is that the divine resides right here. And so in some of his discourses earlier, he says that when that point touches there, it's almost like the bell ringing. Somebody knocks on your door, or you ring the doorbell. So the person inside has to open the door and say, welcome, come in. It's like that. So if the divine exists right here, and you're ringing his doorbell, he has to say, come on in. Yes, right. Yeah, so Shiva's here and Shakti's trying to... Right. अच्छा, उसमें क्या होता है, इसमें मतलब 3 बंद लगते हैं। पहले तो इसको अपना आसन बदलेगा। अब पहले मूलाधार में बंद लगे। इसमें 5 प्रकार के वायु होते हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राण वायु तो ये प्राणायाम, अपान वायु नाभि से नीचे के डिस्चार्ज को बाहर फेंकता है, और कुंडलिनी रीढ़ के आखिरी में, बेसमेंट में, सैक्रम जिसे कहते हैं, 3.5 आंटे लगा करके सोई हुई है। दुम को अपने मुंह में दबाए। जब तक प्रॉपर गुरु नहीं होगा, वो अगर हठयोग से उसको जगाओगे तो नुकसान कर देगी। तो आपको केवल नाम वो जब जाग जाएगी तो ऊपर उठेगी। अब ऊपर उठे कैसे? नीचे से कौन पुश कर रहा है? जैसे रॉकेट जाता है तो पुश करता है नीचे से एटॉमिक एनर्जी।
तब फिर वो बंद लग जाएगा तो अपान वायु ऊपर उठने लग जाएगी। जो ही नाभि के ऊपर उठी कुंडलिनी, दूसरा बंद लग जाएगा, हैं? समझे? उसको उड़ियान बंद कहते हैं, उड़ियान बंद। फिर ऊपर उठ सकते, इस गड्ढे से ऊपर जो निकल गई, तीसरा बंद लग जाएगा, उसको कहते हैं जालंधर बंद। फिर बाकी जो हिस्सा बच गया उसमें हर तरह के मूवमेंट संभव नहीं, तो प्राणायाम होता है। और प्राणायाम जब पूर्ण हो गया तो कुंडलिनी आज्ञा चक्र से फिर समाधि लग जाएगी, फिर योग नहीं होगा। मगर उसके लिए पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। दर्द पैर में तो नहीं लगेगी समाधि, तो सारे रोग जब तक खत्म नहीं होंगे समाधि नहीं लगेगी, और समाधि लगे बिना साल्वेशन संभव नहीं। There are 5 kinds of vayu. Vayu means winds, but also sort of energies in that sense. So there are 5 kinds of winds in the body. So the one that he talks about, there are 2 that he talks about. One is the pran vayu, and the other one is the apan vayu. So the apan vayu is responsible for sending out discharges from the body. You know, excretion, right. Exactly. And so when the guru awakens the kundalini, it is the apan vayu that pushes the kundalini upwards. Sort of the way that he sort of describes it, he compares it to the way a rocket is propelled upwards. In the same way, the apan vayu propels the kundalini upwards. So once the kundalini is propelled upwards, the first yogic movement that you go through is called the uddiyan bandh. Is that this? Yes, the one right at the bottom. And then slowly, you go through other kinds of yogic movements that cure your body of diseases or that indicate the rising of the kundalini through the chakras, and that's right up till here. Now here, after this is where the spinal column comes to an end, and the kundalini until then has been rising along the length of the spinal column. Okay. Now that it has come to the nape of your neck, the spinal column comes to an end, and there's no more space to go up. There's there's a gap right there. Okay. So that's when the pran vayu propels the kundalini upwards through the pranayam. There's a pranayam. Pranayam, that have you heard breathing exercises? Yeah. That's called. Oh, you mean that happens automatically? It happens automatically. Oh, okay. I see. Okay, yes. yeah. ऑटोमेटिकली होएगी, सब ऑटोमेटिक। इनको कुछ नहीं करना है, ये तो नाम जपेंगे, वो ध्यान रखेंगे, बाकी का काम अपना। What he says is that all these movements will happen to you automatically. You don't make any concentrated effort to bring them about. The mantra jap and the meditation will bring that around. Now he says that the pranayam is of 100 different kinds, and there are some spiritual gurus who make you practice only one specific type, and that specific type might not be suitable for your body, and it might cause certain problems later on in life. But when the kundalini makes it happen automatically, it brings about a pranayam that is suitable for your body. Yes. Or for your spirit in that sense. सारा बता दिया आपको, अब वो मंत्र दे दें, मगर उसके लिए एक तो ये जो मंत्र होगा वो किसी को बताया, सीक्रेट रखा।